थोड़े बहुत बचे थे जो पैसे, वो भी इसी मकान पे लगाए। आज हमारे पास कुछ रहने के लायक नहीं है, कुछ खाने के लायक नहीं है। इस मकान के पीछे जो मकान थी वो पहले टकरी हुई नहीं थी, इतना फैसला था उसमें, 1 फीट का फैसला था, 1 फीट का फैसला था। अब वो मकान इस मकान पे चिपक गई है, उसने इस पे धक्का मार दिया, तो ये दीवारें जो है वो इधर को धंसने लग गई। It was January 3rd, 2023 when 44-year-old Durga Lal first realized that his house was caving in. The house he had built 3 years ago with a lifetime worth of savings. What had looked like benign cracks on the walls 14 months ago had turned dangerously wide overnight. वो आए थे शाम को 7 बजे करीब आए थे। उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से निकलो तुम फटाफट, जितने जल्दी हैं उतने जल्दी यहाँ कमरा खाली करो, आप नगर पालिका में रहो, वहाँ रहने की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए। That fateful day in January, thousands of people like Durga Lal had to flee from their houses across the Himalayan town of Joshimath when the ground on which the town stood started sinking. Deep cracks emerged at alarming rates across buildings, roads and farmlands. Hundreds of houses and hotels were damaged overnight. Some collapsed and had to be demolished. जो ये इलाका है सिंगधार वाला, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल, सबसे ज़्यादा खतरे वाला इलाका है, और पिछले कुछ दिनों में देखिए फिर और ज़्यादा ये नीचे गया है, लगभग 1 फीट और नीचे चला गया। For the last 5 months, as news of Joshimath sinking, in a case of land subsidence as it is called, started spreading, frantic questions rang out across the country. What really was happening in that Himalayan town, particularly popular amongst religious tourists? ये जो नीचे है, ये जो NTPC की तपोवन विष्णु घाट परियोजना है। Joshimath-based activist and a local himself, Atul Sati points us to the contentious NTPC Limited hydroelectric project on the Dhauli Ganga river that many, including local communities, blame for the situation. It has been alleged that in 2009, a tunnel boring machine used for the 520 megawatt Tapovan Vishnugad hydroelectric project ended up puncturing an underground aquifer. Over the years, this reportedly accelerated land subsidence in the region, with January witnessing its tipping point. यही वो सुरंग का हिस्सा है जहाँ से अंदर जा कर के उनकी TBM मशीन फंसी है, और यहाँ से ठीक 4.5 किलोमीटर पर अंदर जा कर के TBM मशीन 2009 में फंस गई, जिसके ऊपर बोल्डर गिरा और वहाँ से जो है 700 लीटर पर सेकंड पानी निकलने लगा। वो पानी आज भी उसका रिसाव हो रहा है यहाँ नीचे से। वही पानी है जिसकी वजह से जोशीमठ का जो एक्विफर है या वहाँ के जो पानी के स्रोत हैं वो सूख गए, वो ख़त्म हो गए। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है, ये मानना है कि उस पानी का लगातार पिछले 10-12 सालों से जो रिसाव हुआ, उसी की वजह से जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है वो उसका एक प्रमुख कारण है। The National Thermal Power Corporation Limited, media reports suggest, has been dismissing the allegations. We tried contacting NTPC Limited but failed to get a response. Veteran geologist Dr. Naveen Juyal has been studying geological conditions at Joshimath since the 1980s. His area of work includes assessing the feasibility of development projects in the higher Himalayas. The tipping point is there was a stream that abruptly emerged, and I call it in my geological parlance the central segment. It's a kind of cavity, kind of depression in the central segment. In that particular segment, there was no stream whatsoever. It abruptly emerges, and when it emerges, it has got tremendous turbidity. It never happens in geological processes. It follows certain pattern, certain fractures, certain lineament we call it, but it's coming all of a sudden. The arguable question then was, when the natural rocks of the mountains are incapable of holding such water, where did this muddy stream emerge from? Now, in order to generate a water with certain turbidity, you have to store that water somewhere within the rocks. If you go to limestone terrain, you get a lot of caverns and cavities. There I can expect that a lot of water is get locked. Sometimes this underground
limestone caves generate huge floods. We don't have limestones here. We have got crystallines, we have got quartzite. That kind of rocks are there. So my question comes there. What was that particular cavity that allowed this particular water to stay for such a long time? One possibility, Dr. Jial suggests, is that it was the 12-kilometer long tunnel built for the hydroelectric project that ended up storing all that water, and that is where it sat like a ticking bomb. The large volume of water itself had probably accumulated from the deadly 2021 flash floods in the Rishiganga and Dhauliganga rivers that claimed more than 200 lives in the state. In 2021, Rishiganga disaster, lot of muck along with the water got into this particular tunnel. How far it went, I have no idea, because I have never been, I have not seen the reports. I have neither the reports are made public. How far it really reached. Okay. Now, people in Joshimath are speculating. I'm using a word with lot of responsibility. They are speculating that probably this is the water which was locked inside the tunnel in 2021 Rishiganga disaster. But on 3rd of January, the tipping point comes, the hydrostatic pressure probably it becomes so strong that whatever barrier was there, subterranean barrier was there, it got busted out, and that water started flowing through this particular channel at Marwadi and started the building to creep along with from the soil. नमस्कार और ठीक है बस लगे More than 12 generations of Atul Sati's family have lived in Joshimath. Today, he is the veritable face behind the people's movement, Joshimath Bachao Sangharsh Samiti, members of which have been demanding an immediate stopping of construction for the hydropower project and for the 13-kilometer Helang Marwari bypass. They have also been asking for an appropriate relocation and rehabilitation policy, fair compensation for property and livelihood, and a plan to rebuild a safe and new town for Joshimath. सरकार ने माना कि केवल 30% शहर जो है वो खतरे में है, जहाँ ज़्यादा डैमेज हुआ है और जो खतरे में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि केवल 30% शहर नहीं बल्कि सभी वार्ड्स में लगभग वो जो है 9 वार्ड्स में फैला हुआ है और 50% से ज़्यादा शहर उसकी जद में है और केवल 868 घर नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा घर, लगभग 1000 घर ऐसे हैं जिनमें सामान्य या सामान्य से ज़्यादा क्रैक्स हैं और इसमें जो है प्रभावित होने वाली आबादी 50% से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जोशीमठ की अगर आबादी को हम 25,000 माने तो लगभग 12,000 आबादी जो है इससे प्रभावित हुई है, परोक्ष तौर पर और अपरोक्ष तौर पर। As part of immediate rescue operations, the central and state governments had arranged for food and accommodation for those affected. Hotels, army bunkers, and municipality compounds were turned into shelters, but locals say those were short-term measures. The state government has also installed 15 prefabricated huts in a village called Dhak. But far from the main town and from their original homes where their belongings still lie, hardly anyone is willing to move. After spending 3 months in a hotel where the family had been rehabilitated, Durgalal moved back into his damaged house. The walls, however, continue to crumble. It is still a threat to life and could worsen when the monsoons hit the mountains. इसलिए आना पड़ा, बीच में लोगों ने कहा होटल खाली करो, तो कुछ इस चक्कर में भी आना पड़ा। फिर बढ़ाया सरकार ने, फिर बढ़ाया, 1 महीने के लिए बढ़ाया। तो फिर वहाँ रहने की तो बेड, छोटा सा बेड है, इतना ही बड़ा बेड है। तो 4 मेरे बच्चे हैं, 2 हमें कहाँ रह पाएंगे उसी बेड में। तो कुछ उससे भी हो रहा था दिक्कत में। सर, ये हमारा घर है। हम लोगों को यहाँ 6 तारीख को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, 6 जनवरी को। तो उस टाइम तो दरारें इतनी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे ही ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद से जब हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, उस टाइम घर ऐसा था कि रहने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी मोटी दरारें, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी यहाँ पर। फिर 6 तारीख को जब हम लोगों को शिफ्ट किया गया तो उसके बाद 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले थे देखने के लिए हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों के लिए वहाँ पे होटल की व्यवस्था की गई, खाना पीना सब कुछ वहाँ पर था।
धीरे धीरे सारे लोग आ रहे थे यहाँ पर पूछने के लिए, हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी हमसे मिलने आए। बाद में 1 महीने हुआ जैसे ही, तो उसके बाद चीज़ें होना बंद हो गई। तो 6 अप्रैल को खाना भी बंद हो गया था वहाँ पे। उसके बाद से हम लोग यहीं पे आने लगे, दिन भर यहाँ पे रहते थे और रात को होटल में सोने के लिए जाते हैं। हमारे लिए फिर बाद में मुआवजे के लिए कहा गया कि अब आपको मुआवजा मिलेगा, तो बहुत सारे कागज़ हमें जमा करना पड़े, 12 बैंकों के सिग्नेचर वगैरह। और जब ये सारी चीज़ें हुई, हम लोगों को मुआवजा मिला, तो हम उस चीज़ से नाखुश थे, क्योंकि 12.5 लाख रुपए हमारे घर की कीमत लगाई गई थी, जिसमें जोशीमठ में एक छोटा सा कमरा ही 7 से 8 लाख रुपए में बनता है, और इन्होंने हमारे लिए घर बनाने के लिए 12.5 लाख रुपए दिए थे। तो अभी तक हमने वो चेक बैंक में नहीं दिया है, वो अभी हमारे पास वैसे ही रखा पड़ा है। Cracks as deep as 5 feet ran along Shivlal's 3.5 acre farm. ये दूसरी जगह, और यहाँ तो लाठी अगर मैं और डालूंगा तो पता ही नहीं लगेगा। The 75-year-old has lost his orange trees. He can't plant them at a new spot because he's not sure where the next crack will appear. वो दरार अलग से दिखाई दे रही, फिर आपको इधर कोने में देखो पत्थर की जड़। For farmers like him and daily wage laborers like Durgalal, depending on their usual livelihood avenues is no longer an option. ये कृषि ये छिन गई है, 5-5 फुट एक अप डाउन हो गई। ये माल्टे कागजी नींबू का पेड़ नहीं, माल्टे का पेड़ था। इसमें 3 टहनियाँ थी, इतने बड़े 300 ग्राम के मीठे माल्टे होते थे। ये सारे वो हो गए। Experts tell us that the story of Joshimath sinking is not new. The cracks were reportedly noticed as early as the 1970s, followed by studies and warnings against unplanned construction. 1976 की मिश्रा कमेटी है जो कह रही है कि मोरैन पर है, भूस्खलन का जो मलबा है उसके ऊपर है, या भारी निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, बोल्डर्स नहीं हटाए जाने चाहिए, पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। और हमने सारे काम उसके अगेंस्ट किए। बड़ी परियोजनाएं आई, यहाँ पेड़ काटे गए, यहाँ बोल्डर्स हिलाए गए, यहाँ भारी निर्माण कार्य हुए। उन्होंने कहा था कि सीवेज सिस्टम यहाँ बनना चाहिए, जो नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि यहाँ की जल निकास प्रणाली ठीक होनी चाहिए, वो जो नहीं हुई। तो इन सब ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। Located at over 6,000 feet in the Garhwal Himalayan ranges and intersected by 2 turbulent rivers, Joshimath has always remained naturally vulnerable to earthquakes, floods and heavy rains. All of which, as Dr. Jial tells us, is likely to get exacerbated with climate change. So the impact of climate change in this area is going to become very severe, because mind you one thing, our planner thinks that Himalayan rivers carry water and energy. They forget they carry a lot of sediment, and these are the sediments which are the major culprits. Joshimath kind of towns are located in those locations where there are plenty of sediments waiting for a small trigger to get mobilized. We have to be extremely careful about any planning strategy in this area. According to recent studies, over the last 2 years, Joshimath has been sinking at a rate of nearly 6 centimeters annually. As the primary gateway to Badrinath, one of the 4 main pilgrimage sites for Hindus, the town witnessed a footfall of 5 crore tourists in 2022 alone. The lesson which I think we learn from Joshimath now is that there are many towns in Himalaya which are located in identical geological, structural and climate setting. Let us not repeat this mistake which we have done in Joshimath. In the name of development, we have ignored the vital terrain boundary constraints. Let us appreciate them and then only we go forward. Most importantly, let us not ignore the local traditional wisdom. The people who live in the terrain, they know better than all of us how the terrain is responding. So that we must know, and most importantly, the carrying capacity. We have got no data for the high Himalaya. What is the terrain carrying capacity? We must know the terrain carrying capacity, and then only we should take it. Otherwise, there are going to be many Joshimath in the making. We tried to reach the Uttarakhand State Disaster Management Authority to get an understanding of what the way ahead looked like, but were declined to comment. Meanwhile, residents like Durgalal continue to live a life of dread. The house that he built cost him 12 lakh rupees. As compensation, he was paid 1.8 lakhs. सर हम तो यही कहेंगे, अगर सरकार अगर
हमारा भला करना चाहती है तो कहीं हमें शिफ्ट कर दे, कहीं हमें मकान बना के दे दे, या मकान जगह दे दे हमको। बाद में बरसात होने वाली है तो सरकार यही चाहती है, अगर मरना है तो फिर ठीक है, मर ही जाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.